Hello bachcho, let us read the question. A solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane making an angle theta with the horizontal. Then its acceleration is option A 1 by 3 g sine theta, option B 2 by 3 g sine theta, option C 2 by 5 g sine theta, option D 2 by 7 g sine theta. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोशन of an object which is rolling without slipping. जब एक ऑब्जेक्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मोशन कर रहा है उसका मतलब ये है कि द पॉइंट of contact between the object and the surface is at rest with respect to the surface. मतलब जो भी पॉइंट है वो लेफ्ट राइट या इधर उधर का मूव नहीं हो रहा होगा. So that point of contact is not moving. So as the object rolls down an incline, हर इंस्टेंट पे वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सरफेस के साथ उसी एक स्ट्रेट लाइन पे मेंटेन होता है. फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग the point of contact between the object and the surface between the object and the surface is at rest with respect to the surface. This point of contact remains along the same line at any instant of time. Same line of motion at any instant of time. तो इस डायग्राम के हिसाब से this object which is this solid cylinder in the question वो इस incline के लाइन के डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो हर एक पॉइंट पे ये जो कांटेक्ट है बिटवीन द सिलेंडर एंड द सरफेस वो इसी लाइन के ऊपर जा रहा होगा. इट डज नॉट फॉल ऑन आइदर साइड विच मीन्स इट इज़ नॉट स्लिपिंग. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसी डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं. सो वी कैन सी दैट the object will have a normal component in this direction and it will have its weight which is equal to mg in this direction. So if the incline makes an angle theta with the horizontal, then the component along the incline is given by mg sine theta. So there is also rolling which is given by the frictional force which gives rise to the torque which causes rolling without slipping. So consider a solid cylinder of mass m and radius r rolling
without slipping down an incline which makes an angle theta with the horizontal. Therefore, तो हम ये कह सकते हैं कि the force along the incline is given by mg sine theta, where mg is the gravitational force on the object, force on the cylinder, the frictional force acts opposite to the to the force mg sine theta, and provides the necessary torque. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक टॉर्क है जो ऑब्जेक्ट को स्लिप हुए बगैर रोल होने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड्स द नेसेसरी टॉर्क for the object or for the cylinder in this case to roll without slipping. तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ के इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि from Newton's second law of motion, ma is equal to mg sine theta minus f. So the torque due to the frictional force, okay, the torque due to the frictional force is tau is equal to I alpha, where I is the moment of inertia of the cylinder and alpha is the angular acceleration. तो हम ये भी जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, वेयर एफ इज द फोर्स और आर होता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर. Therefore we can say F into R is equal to I alpha. In terms of linear acceleration, हम alpha को ऐसे लिख सकते हैं. In terms of linear acceleration, alpha is written as A by R. Therefore, F into R is equal to IA
by R, or we can write the frictional force F as I A by R square. तो हम इसको फोर्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. Substituting for F in the force equation, तो हम ये लिख सकते हैं कि MA is equal to mg sin theta minus IA by R squared. So rearranging terms, हम इस इक्वेशन को MA plus IA by R squared is equal to mg sin theta लिख सकते हैं. So taking m common on the left hand side, we can cancel it with the m on the right hand side. तब ये होगा m into a plus IA by mr squared is equal to mg sin theta. m कैंसिल करते हैं. अभी a कॉमन लेके हम 1 plus I by mr squared लिख के can write this as equal to g sin theta, or acceleration is given by g sin theta divided by 1 plus I by m r squared. तो ये द जनरल फॉर्मूला है लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. फॉर अ स्पेसिफिक केस, जैसे कि यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है, हम उस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के वी विल फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cylinder is I is equal to mr squared by 2. Therefore, A is equal to g sin theta divided by 1 plus mr squared by 2 mr squared. mr squared कैंसिल करते हैं. इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके we will get the acceleration of a solid cylinder which is rolling without slipping down an incline will be equal to 2g sin theta divided by 3. तो हम अभी क्वेश्चन में जाके करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे. The acceleration of a solid cylinder of mass m and radius r rolling without slipping is given by, the correct option is option B, 2 by 3 g sin theta. Hope you have understood it well. Best of luck.